Hello, 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 hello. Are we live, my friends? Seems so. Let me just quickly verify it. Hello, hello. Hello, hello. Yep. Alright, give me a second. Alright, तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और लाइव स्ट्रीम में जहाँ पे वी आर वर्किंग ऑन आवर साइड प्रोजेक्ट्स। और अभी हम ट्रैकलिशियस जो हमारा फुल स्टैक प्रोजेक्ट है उसको फिगर आउट करके उसे सही कर रहे हैं, राइट? तो वी वर इन द लास्ट सेक्शन ऑफ टेस्टिमोनियल सेक्शंस, जहाँ पे पहले ये हुआ करता था एंड दिस वाज लाइक टू मच। तो अभी हम इस चीज पे आ गए हैं एंड दिस इज द थिंग, राइट? तो अब इसमें वी वर वर्किंग ऑन टेस्टिमोनियल सेक्शन लास्ट टाइम, तो अभी इसमें थोड़ा सा लास्ट फिनिशिंग टच बचा है, एकदम लास्ट, है ना? तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दैट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमने यहाँ पे इसे ग्रिड बना रखा है, राइट? अब द थिंग इज, इसको मैंने 400 पिक्सल की रो दे रखी है, राइट? जबकि 400 पिक्सल यूज भी नहीं हो रहा है। व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना गो, gonna remove this. I'm gonna come here, click on this particular item, this one, right? इसकी होवर क्लास ऑन करके I'm gonna एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा इज ऑफ रविंद्र जडेजा, राइट? तो लेट्स go to Ravindra Jadeja's one and we'll just quickly check what is the height. It's 232 pixels, right? So we are gonna do 240 pixels instead of 400 pixels. 240 pixels. तो अभी क्या होगा? These all get much closer to each other, right? And now if I go and remove hover button from both of these, yeah, you see it is cool. Now at the same time, what I want is I want to increase the duration to something 700 और इसे ease in कैसे करेंगे? Ease in out. Yep. अभी इधर तो it is good, right? But in the Virat Kohli's case, you see here, here, here. This we'll have to deal with. Now, how can we deal with this particular thing? Let's see. इसका भी ड्यूरेशन 700 करेंगे, ये साथ में होना चाहिए। नाउ वी विल सी क्या सीन है इसका। वेट बॉटम वन एब्सोल्यूट ओवर पे क्या होगा? लेफ्ट फुल हो जाएगा, ट्रांसलेट एक्स ये हो जाएगा। नाउ हाउ अबाउट आई इंक्रीज द विड्थ 240 पिक्सल, है ना? और इसका कर दूं मैं 250 पिक्सल और इसको थोड़ी और जगह दी जाए, राइट? इफ दिस इज ओपन, आई वांट टू टेक इट मोर स्पेस। तो लेट्स डू वन थिंग, हाइट को कर देते हैं 200। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड।
मैं इसी की हाइट 250 पिक्सल कर दूं तो क्या होगा? हम्म ऑलराइट, दिस इज मेकिंग सम सेंस। इसको तो फिक्स कर देंगे, कोई चिंता नहीं है। अगेन 250 पिक्सल्स इज जस्ट टू मच। Let's do our 240 pixel. Because you have to keep. Okay, Jadeja's is again, it's too much. About 200 pixel. जडेजा का ही है ना, जडेजा का होगा करेंगे. So I feel like this is good enough. 200 pixels. Right. इसको कर देंगे हम 210 pixel. If I remove the hover from both of them, ऐसा क्यों हो रहा है? और बट मैंने तो ऑलरेडी उसको क्या रखा है ना कि alright, let's do a thing. Let's open meta.ai. Create me a tailwind CSS string for grid calls tree. For each row, the HEIGHT should be 210 px. One more thing. हाइट तो सही है यार. क्या हाइट है इसकी? 264 पिक्सल्स. Wow, man. So let's do a 280 pixel. Now let's see. Okay, this was the issue, but how come अचानक से 260 पिक्सल कैसे हो गया भाई? 200 पिक्सल की, अच्छा इसको 200 पिक्सल की हाइट दी है मैंने इस डिव को. भाई इस डिव की भी तो कुछ हाइट होगी और इसकी भी तो कुछ होगी. Much more makes sense now. Does it make sense? It makes sense. Cool. Right, so this is the first thing which we had to do. Now 700 is just too much. Let's do our duration 500.
This is good, and I want to now when hover. All right. Okay, it should be 360 degree. Uh, 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 360 degree, 720 degree. Yes, cool. Now we are good to go with testimonial tile or testimonial section. बस इतनी सी देर का काम बचा था in our last live. Now after this we are gonna work on what you call huh, commit and push. Now there is one thing which I need to do before we move ahead from this page, those others, and that is with respect to state. I just figured out it should be a cover and not contain, because I'll tell you, if it was auto, right, like earlier case, this, you see this issue, but for bigger screens it is breaking, right? But it should not, ideally. But and when I change it to cover, it has, it is there. So that is why fix minor UI fix comment. Cool. We'll close it. We'll close it. uh height को कर देंगे हम fit, and we are gonna see, yes, yep, yep. Now ये जो ये वाली चीज है, this we will do in the last patch. I mean जब scroll bar को overall handle करेंगे कहीं पे,
तो एक ही बार में देख लेंगे बिकॉज इट्स नॉट। इसको थोड़ा फिक्स करें क्या? इसको क्या करेंगे हम? इसमें कर देता हूं मैं मार्क। काम करता हूँ, मार्क जाके ले लो। और हाँ, करेक्ट। फेच फर्स्ट 10 ओनली। एक तो ये करेंगे हम। और यस, डॉट स्लाइस 0, 10। And now here will item center justify item center नहीं होगा, स्टार्ट होगा, जस्टिफाई स्टार्ट होगा, गैप 4 होगा और ये होगा। इसकी मिनिमम हाइट 500 पिक्सल रहेगी। नाउ 500 पिक्सल अगेन won't work. I'll tell you what would be the exact 250 pixels. Okay, what is the height right now of two rows? HEIGST 500 pixels. वाह, why इसकी हाइट कैसे 500 पिक्सल ही है? That is so weird. अच्छा, क्योंकि मिनिमम हाइट 500 पिक्सल दे रखी है। इंस्टेड ऑफ डूइंग फ्लेक्स रैप आइटम स्टार जस्टिफाई सेंटर गैप 4 रहने देते हैं। इसे हटाते हैं, इसे भी हटा देते हैं। लेट्स डू अ ग्रिड, it gives us much better options. So grid calls 1, mid grid calls 2, large में grid calls 3. As a matter of fact, और एक्सेल में कर देंगे हम grid calls 5. ठीक, अब हर रो की हमें हाइट जाननी रहेगी, तो वो कैसे मिलेगी? It's 140 pixel of this, right? This is 144 pixel. So if I go here, I'm gonna do मेरे को कुछ गलत लग रहा है। Explain this tailwind CSS please.
इसको उठा के हम डाल देंगे यहाँ पे 150 पिक्सल्स के साथ। ओके, कुछ गड़बड़ है ना? समथिंग इज रॉन्ग, आई कैन सेंस इट। लेट्स सी। Now this should be in items center, a baseline क्यों यार? Justify center, let some other AI explain it this too. Let's go to chatgpt.com. Ex Explain this Tailwind CSS, please. Cool. बट अभी जस्टिफाई सेंटर क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, दिस इज फॉर टाइल। ओ माय गॉड। नहीं, दिस इज आई एम डूइंग समथिंग। सही तो कर रहा हूँ यार। कूल ना, so much better. Now justify items के लिए I'll have to search justify. मैंने क्या किया है? जस्टिफाई। टेक्निकली मैंने लिखा तो सही है यार, इट शुड वर्क। But if it is not working,
Okay, we are gonna use this. Cool. इसकी एक मैक्स विड्थ सेट करनी पड़ेगी हमें, which would be, this is the ideal width. 396, 350 pixels I think is best. Testimonial tile, max width 350 pixels. Right, what just happened? अरे यार, ग्रिड ऑटो रोज है क्या? है ग्रिड रोज है?
Let's see if this works out. Hopefully it should. Okay, sorry, it was not 150 pixel, 280 pixels. Sorry. Okay, I feel better now. Now same thing we are gonna do here. कहाँ पे था स्टेट में थे वो, यू आर राइट. 150 pixel. Cool. I just feel like ये बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा कम कर देंगे अब हम. Cool. Fix minor UI fixes. Let's quickly see क्या क्या चेंजेस हैं अपने. हाँ, हमें सिर्फ 10 चाहिए. और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब तो कितने भी आए, आई डोंट थिंक इट वुड मैटर. Fine. Or would it? Okay, it would change the height of it. Now if I do a minimum height something, तो कितना होना चाहिए? इट वुड बी, मैंने 150 पिक्सल एक को दे रखा है, राइट? और 150 पिक्सल में मेरा 4 पिक्सल्स का गैप है, 16 पिक्सल का. So if there is one row, it will be only 150 pixel. It will be two, or how many rows at max it can be? It is 150, 600 पिक्सल. तो ये हो गया 600 में 16 16 16, ये जोड़ लो 16 तो 700 पिक्सल कर देते हैं. 700 px. Cool, right? Now I don't want it to be item. इंटर हटा दूं तो क्या होगा? ये क्या हो रहा है यहाँ पे अब? प्लीज एक्सप्लेन. आई हैव 700 pixels, but it is only 3 rows, so it has taken ज़्यादा height. मिनिमम 150 पिक्सल है, मैक्सिमम भी 150 पिक्सल ही कर देता है. I don't want any more than that. If I come here now, this will be good. This again will be fine, and yes. Alright, at least for laptops it is fixed. For large laptops, I would say, because even for 4, the number of rows changes, right? So I'll need to do a max 10, that is for sure. So I'm gonna do dot slice 0 comma 10
because then only it could be seen, right? तो अब अगर 10 है तो I can just decrease the minimum height to 150 300. Alright, let it be 700 pixel. We'll see it later if it messes up, right? टेस्टिमोनियल टाइल में हमने मैक्स वर्थ दे दी, करेक्ट, मेक सेंस, ये चेंजेस किए और यहाँ पे हाइट फिट कर दिया एंड कमेंट एंड पुश। ठीक है, अब आ गए हम यहाँ पे, हमारा पहला पेज इज गुड टू गो, लैंडिंग पेज इज डन। इसमें हमने छोटी से छोटी चीजों का ध्यान दिया एंड आई एम रियली हैप्पी विद व्हाट हैज कम out to be. We'll see if we can find some testimonial level image here. Else I'll leave it with this because this is looking good. और अब हमें चाहिए sign up page. So this is the route. So let's see. However, we actually kind of forgot. That is why I'm saying this. How did we create routes? Pages, right? Yeah. पहले route बना लेते हैं. Okay, we need a component. So I'll create one page, site gn hyphen up index.jsx and a page, इसका क्या था, होम था ना शायद, इसका कर देते हैं एस, ठीक है, और इसको, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, cool right? So if I come here, yes, now this class I feel like would be needed again. Anyhow, let's go to sign up page here. Yeah, upload profile picture photo, first name, last name. Oh, this animation I really liked. ये तो डालने वाले हैं हम. Upload profile picture for pass, already have one, login. तो ये तो चाहिए भाई. अच्छा, अब ये देख रहे हो, ये पीछे JS particles करके कुछ तो लाइब्रेरी थी which I really, and I was experimenting with things that time. Give me a second. Give me a second, friends. Yes, I was drinking water. तो मैं मस्त एक्सपेरिमेंट कर रहा था चीजों से. दिस इज समथिंग आई फाउंड एंड आई एंजॉयड इट, तो मैंने कर दिया था. बट दिस टाइम अराउंड दिस इज नॉट समथिंग वी आर लुकिंग फॉर, राइट? इतना नहीं करेंगे हम. इफ आई क्लिक इट, it explodes as well, right? We just need this form. So let's quickly start building one. And
Let's go to the main JSX. Okay. मेन JSX में नहीं है, इंडेक्स CSS में डाल दें क्या? Yes, we can do it the original way. Uh, Open this elements body, and if I go to the landing page, everything is inside root. So let me just do some div, sorry, not div, root, है ना? We'll come here, width, hundred VW, minimum height 100 VH. I just wish this is VH. Yep. Or बाकी will try to give height, fit, content और flex call वगैरह तो नहीं I think is needed. Cool. This is come here and then some padding. Uh, 0 space 100 px. अच्छा, but if I will create this, so it will be an issue. Padding x कर दूंगा तो 0, padding 0 here. Okay, now width screen is an issue. Sorry, yeah. So 100% करें तो and it breaks. But why is it breaking? Why is it breaking? First thing, it is fixed. Now I don't want 100 view, 100%. So it breaks. Oh, it doesn't. Right, cool. If I go to sign up, cool. Let me do a background color red. Cool. So this comes here और फिर ये डिलीट होता है यहाँ से और मैं जाता हूँ बैक and everything works cool.
Yep, that is cool. Now we are at sign up page. Refactor CSS. So it will be home page or index CSS. Comment. I'll close this and this, and I'll come here. Now what I'm gonna do is I'm gonna create a common component of input field uh, for this. This is a lot of CSS, right? और जो भी उसकी details रहेंगी और label रहेगा, that we will pass alongside. ठीक ठीक. So I believe I have seen here CN user right? Huh, cool. So let's start with common component input file dot jsx page input field props accept करेंगे हम बहुत सारे. We'll start with something simple, label. Cool. तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो आईडी चाहिए रहेगी, टाइप प्लेस होल्डर लेबल क्लास label class name input class name, and we will see what else. Correct. Cool. Label HTML for ID, class name, label class name, and it just won't be this, it would be compromising. Yep, label input type ID placeholder class name. Again it will be like this. Cool. So this is the basic setup of एक दो तीन prop, और कैसे देते हैं यहाँ पे, हाँ prop, if any other prop I get. Cool. So we'll close all. We won't. I don't think I want to save anything here. और लैंडिंग पेज को क्लोज करेंगे, लॉगिन साइन अप पेज में जाएंगे और साइन अप पेज में जाएंगे. ठीक है. Login page background, if I'm not wrong, is the same thing as, yes, particles. So don't want that. I'll go to sign up page design. ठीक है भाई. Set dialog box. Acha, this is the form thing, right? How about we create a paragraph as well? Yes. Yes. Yes.
Yes. Yes. तो अगर कुछ एरर होएगा तो वी कैन पास इट टू दी दिस इनपुट फील्ड एट वंस और वहीं पे वो हमें एरर दिख जाएगा. कूल. तो अच्छा एविटार के लिए रिएक्ट एविटार एडिट लाइब्रेरी यूज की थी. दिस आई डोंट रिमेम्बर बट लेट्स डू अ क्विक रिएक्ट एविटार एडिट का जाके npm करते हैं. एडिट ही है ना. एडिट ही तो है ब्रो. आई डोंट इवन एम श्योर नाउ. अच्छा है तो 2022 all right now I remember it's for the user file. Cool. Process. What just happened? Right. So is it? Yeah. All right. This is what we are gonna use. This is for sure. CD apps, Precious, FENPMI, Avatar Edit. Cool. So, all right. What else? What else? What else? And dialogue title, button, link, nav API, alert box. Cool. We'll start with. We'll first deal with the UI part as we usually do, and then we'll move ahead with the form thing. तो React. Okay, अच्छा इसके लिए we can use क्या था वो React forms. हाँ this is what I have used in my other program projects, right? Let me quickly just order. Yes. Uh, React took form. Yes. 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 So this also we are gonna do. Okay, what just happened? In that case, we can go back and look for this. Now again, this is showing only this, but I think we don't have any other solution. React avatar. ये क्या है भाई?
But this feels like something I would like to explore, but this is why I was skeptical on moving to React 19 because not everything is being supported yet, right? Cool. So let's start with input field only. Profile photo, ठीक है? We'll keep it for some time. Dialogue title, avatar, dialogue. अच्छा, for this I needed dialogue. Okay. Yes. Cool. So div class name input holder, input text required, uh, required is equals to false by default, and this we can do, and similarly required is equals to required, or which ultimately everything is, but ठीक है चलो. अच्छा, तो अब मैंने हर उसमें फॉर्म लेवल्स डाल रखे हैं. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीएसएस उठा के लाओ भाई. कहाँ है सीएसएस का? लॉगिन पेज डिजाइन, साइन अप पेज डिजाइन, साइन अप पेज डिजाइन, मीडिया, सीएसएस. तो विल स्टार्ट विद फॉर्म लेवल्स. ये सीन है भाई. So if I am not wrong, एक फॉर्म लेवल में ये डिव हो गया. फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो चीजें आ रही हैं. अब अगर यहाँ दो चीजें आ रही हैं तो इट हैज टू बी फ्लेक्स, राइट? तो तुम कह रहे हो कि एक ही जगह यूज हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता. तो कहीं और तो होगा, दैट इज फॉर श्योर. ओके, दिस इज राइट. अच्छा. कूल कूल कूल, गॉट इट गॉट इट गॉट इट. तो अगर इतनी हाई वेट होगी तभी you'll show it flex, else you won't. Makes sense. H2 is first name. अभी इस पे भी फोकस नहीं करते हैं. Let's focus on the next bit. Div class name as input holder और place input holder को देखते हैं. अच्छा. और
Oh my god, this is gonna be crazy. Let's start with this. ताजवाल तो आई थिंक मैंने इंपोर्ट कर ही लिया है index.css में ताजवाल यस तो विड्थ 100% विड्थ फुल ताजवाल as a matter of fact ताजवाल तो पूरे ही टाइम रहेगा राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ताजवाल तो पूरे ही टाइम रहेगा इनपुट में हो चाहे लेबल में हो तो वो तो इसके पेरेंट को दे देंगे इसको एक काम करते हैं react डॉट सेगमेंट क्लास नेम width full font ताजवाल sans serif nothing as of now और इसको यहाँ पे ले आओ input field let's see what errors do we get id id is equals to first name type text label enter your first name required explain split right करो फट से आईडी दे दी टाइप दे दिया लेबल दे दिया प्लेस होल्डर दे दिया required दे दिया cool hopefully should be able to see something yep now if I come here and just to test bgred 500 what do we see we see nothing so let's do a div here cool okay where were we इनपुट होल्डर इसका पेरेंट डिव हमें मिल ही गया है अब तो हम इनपुट होल्डर की सीएसएस लेते हैं हाइट 50 पिक्सल हाइट 50 px विड्थ 100% which is ठीक है चलेगा मैक्स विड्थ 150 पिक्सल मैक्स विड्थ 150 पिक्सल कर्सर डिफॉल्ट कर्सर default which is wrong I think cursor should not be default okay it's not here it is just here cool cool
Now if what I think is, if I just remove this cursor default altogether, it still will be like this. Right. Now what is the next CSS input folder? क्या हो गया input का? ये हो गया font size 17 point font as a matter of fact text 17.5 px. बोल्ड तो नहीं चाहता हूं मैं. बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट bg transparent outline none border none. I can close you. I can save you. Or yes, much better. Now comes this. अभी इसमें I want to do one more thing. I don't want to use these. I want to use text Excel. I want to make it responsive. obviously 20 पिक्सल हो गया राइट. तो लार्ज कर देंगे इसको हम, which is 18 पिक्सल, which is pretty close. और टेक्स्ट LG करने की बजाय I can we can do it. Let's see. हाँ सही है. और फॉन्ट को सेमी बोल्ड कर सकते हैं हम. फॉन्ट मीडियम कर देते हैं मैटर ऑफ, वो भी छोड़ो. नहीं सेमी बोल्ड कर लो, सेमी बोल्ड कर लो. राइट. कि वो दिखना भी चाहिए उसके पीछे. और इसके H2 में भी तो दे ही रखा होगा कुछ कुछ. आई थिंक वो डिफॉल्ट H2 तो लेगा ही. एनी हाउ, तो लेट्स डू अ थिंग. यहाँ आएंगे तो हाँ. कूल. नाउ if we do placeholder background, so I think we would need another div here. Div class name, tell me margin top 5 pixel width 105%. That is weird. Why is it 105 pixel? Let's start with width full. Next, height initially 0 pixel. Yes, height 0. Border top, border T 2. Border black. Yes. Position relative. Next, z index -1 minus z10. Next, left 50%. Origin top border radius control I. Tell me
equivalent tailwind CSS for this line only, please. Transition all duration 500, ease in out. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. बारह पिक्सल. एलजी और एक्सेल के बीच में कुछ है ही नहीं. वाओ. एक्सेल कर लेते हैं. Lastly, I think mid would be the best, but बाकी let's see. Now for Copilot, write equivalent tailwind CSS, please. Although I think I know how to deal with this. Sibling. Focus. Here. Should I give some name? We'll see. फिलहाल नहीं चाहिए. Here. Focus. Height. कितना कह रहे हो? 35 पिक्सल. 35 पिक्सल is 9. BG red रखते हैं 500 for now, just to see if it is even working.
It is working good. Now we need to fix. Alright, let's do a thing. Cool. Let me just pick this. Yep. अभी क्या हो रहा है? ये नीचे की तरफ आ रहा है. I want to go it up. तो सबसे पहले तो this और border B और इसके बाद origin bottom. Let's see what happens now. Now what if I write absolute? Right? How about I write relative here and absolute here. Bottom 0. अरे पर उसको भी तो रिलेटिव दिया है मैंने मेरे भ्राता. What was it? MT2. MT2 नहीं होगा. इतना होगा. MB होगा आई थिंक. 5 पिक्सल ना. MB. Okay, again I messed it up. So how about I just delete this as of now. ये हो गया राइट. मुझे इसे थोड़ा सा नीचे लाना है. Much better, right? How about we do a size will be 20. Yes. अभी मेरे को क्या चाहिए? ये हटा के enter your first name. Or what happens if I want to fix this input field. Oh, this can't be just 150 pixel. Oh, इतना ही है 150 pixel. Bruh, तो बहुत कम है. हाँ तो अच्छा पर first name only, no. अक्षर. लोकेश. H2 का ये उठाएंगे हम. But again, this enter your first name. और यहाँ पे आएगी px2.
अच्छा नहीं 300 होगा। कूल। अभी इसमें आएंगे हम यहाँ पे MLPX। दिस इज गुड। ठीक है, अभी इसमें आके थोड़ा लेबल के लिए क्लासेस उठाते हैं। फॉन्ट साइज 1.5 आ गया, 36 पिक्सल। वाओ, कैन यू बिलीव इट। ये कितना है? ये 18 पिक्सल है। LG टेक्स एक्सेल कर देते हैं। बोल्ड है और ये सेमी बोल्ड है। वाओ, दैट इज लाइक टू मच यार, दैट इज तो टू मच। आई थिंक दिस इज गुड इनफ। और लेबल इनपुट डिव और एरर स्पेस वाई कर देते हैं। आई कैन डू वन मोर थिंग। और PB4। अच्छा, बिकॉज हाइट इज लिमिटेड राइट। हाइट को कर देंगे फिट। स्पेस वाई को हटा देंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये उड़ा जा रहा है हवा में? एंड दिस इज गुड एक्चुअली। बट अब मुझे वो तो हवा में चाहिए। लेबल को तो थोड़ा ऊपर ले जाना है। PB4 दिया था लिटरली। लेट मी ट्राई MB4। PB4 and
Cool. I feel like this is good. Yep, this is good for the input field. And if we pass error equals to PLS something, anything, just to test. Wow, what is this now? So what I'm gonna do is I'm gonna create another div here. Cool. And यहाँ पे I'm gonna give class name relative. और इस relative को यहाँ से मैं हटा दूंगा. Right. Text rate 500. Or now if I see that's say, but this is very much less. MT2. Cool. तो मैं बेसिकली ये करने से बचना चाहता to add another div, but I think we can't do anything with it. I think I can remove. Okay, never mind. This is good. This is good. This is good. Please enter. Right. So we got our first input field. Now we need to basically create the form. So let's start creating the form. Form कैसे बनाते हैं is the question now. So if I go to some चलिए yes, so I'm gonna import. पहले एक काम करते हैं, let's do one thing. Since not much time is left, जल्दी से UI ही कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं अपन. Right. So I'm gonna delete this and I'm gonna go to index.jsx of home, see if this is section, and then hero section भी एक section में है और बाकी सब तो एक section template में ही है. Right. So this is gonna be a section now. इसकी क्लास नेम अभी मुझे नहीं पता है, बट ठीक है, वो भी पता करते हैं. कैसे पता करेंगे हम? जाके यहाँ पे तो this is not the most ideal one, but think this would be
Let me just do one thing. Let me just, yep, PG color, size full, which is weird. क्योंकि give me a second. अगर मैं यहाँ आऊँ, let's call items. What if I copy this? और मेरा कीबोर्ड हिल गया दोस्तों, एक सेकंड यार, मेरे को एक सेकंड दो। या सॉरी, मेरा मोबाइल हिल गया था। सॉरी, मोबाइल बोल रहा हूँ, क्या माउस, कीबोर्ड हिल गया था। अरे ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मिनिमम हाइट 100 भी बोली है, इसको मैं हाइट 100% बोल रहा हूँ। That is so weird. And then how is it working for my home page? Think it is because of चीज की उतनी हाइट है, क्योंकि if I come to here, हाइट फिट है, हाइट 9 है, तो इसकी भी हाइट हो ही जाएगी। राइट, लेट्स स्टार्ट देन। ये हो गया। नाउ यार, आई एक्चुअली नीड मिनिमम। कूल, यस, राइट। अभी आई वांट दिस, so if I come here, sign up page design, okay, I think I actually messed up the CSS here. So anyhow, let's look for the background property of this, which again I cannot see. Oh, यार, form holder background,
Yes, this. And this section becomes the whole row, and then div becomes this div becomes this div becomes the whole parent of my this, right? Now grid width fit height fit px 8 py 4 or maybe just p10 grid grid calls 1 for your mobile view, for medium grid calls 2, and then I'm gonna cut this and paste it here, and I'm gonna see if I can see something now. Okay, not the best yet, but we are reaching there. And not needed, not needed, not needed. Trans border radius, yes. It would be rounded large. Backdrop filter. Cool. Right. Equivalent tailwind CSS v4, please. Baki, if I'm not wrong, I can quickly go and control K blur. फिल्टर ब्लर है ना, और मैं वहां पे क्या है, बैकड्रॉप फिल्टर है. Yes, I want this actually. तो बैकड्रॉप ब्लर एक्सेस है ना, और क्या क्या है, तो वेबकिट अपने आप हैंडल कर लेगा, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. है ना, और क्या क्या है, बॉर्डर. बॉर्डर तो अपन खुद लिख सकते हैं. बॉर्डर बॉर्डर और बॉक्स शेडो 0040 पिक्सल. बॉक्स शेडो. सॉरी, शेडो एक्सेल कर देते हैं. है ना, and let's see. Cool, sounds good enough to me. और yes, that is pretty much it. ये हो गया अपना पहला आइटम. Cool. अभी यहाँ पे हम I'm not focusing on the avatar as of now because it will take a lot of absolute CSS and all. I'm gonna put these fields. The first field is first name, ID first name, label first name. Required true. Error ka we will see. Then second is last name, and then email,
e- email email और टाइप टेक्स्ट ही रहने देंगे, हम रेजेक्स में टेस्टिंग करेंगे इसकी। यूजर नेम यूजर नेम password confirm password. Now if I am not wrong, it should be of type password. Password. Yes. अब P हम आ गए यहाँ पे, राइट। यहाँ पे और क्लासेस लिखते हैं, स्पेस x4 एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गैप 4 कर दो, गैप 8 कर दो, है ना। कंफर्म पासवर्ड के लिए विड्थ बढ़ा दो, जो कि बढ़ेगी मैक्सिमम विड्थ। क्लास नेम class name not. Oh, actually, yes, that is also something we can do. But let's see. Full span. Max width. Let's just give it 200 pixel. Put class name max width 150 pixel. तो बेसिकली आई वांट कि ये तो सब सेम सा ही रहे। करेक्ट। CN cool, makes much more sense now. Cool. Now if I come here, sign up page, uh now again this is missing something, right? You see, अच्छा sign up button वगैरह वगैरह। Let's start with that. बटन है क्या अपने पास? बटन नहीं है ना? तो बटन टाइप सबमिट रहेगा जी। एक सेकेंड, फिर वो क्या है वहां पे? If I go to my home page, call to action. अच्छा, no problem. Sign up.
करेक्ट। 20 का हम करेंगे खुद से CSS around it means py to px for text black font semi bold ground white over pg white by 80. और इसको देंगे हम कोल स्पैन 2 कोल साइन अप और देंगे विड्थ से हम फिटनेस। इसे सेंटर कैसे करेंगे हम फिर? कूल कर्सर पॉइंटर कूल 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 कूल। अब what is the next thing? I'll write this and then already have account for this. So I would need another div class name call कहाँ पे लिखा था मैंने span 2 height 2 width full bg black let's see height 2 ज़्यादा हो गई height 1 और gap I don't know बहुत चपटा चपटा लग रहा है let me do it at 12 वाई वाइज फिर भी ठीक है वाई वाइज फिर भी ठीक है बट एक्स वाइज आई नीड मोर gap y gap x 16 20 ठीक but what happens when it goes to 1 ऐसा क्यों भाई
ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने उसकी नंबर ऑफ रोज थोड़ी कंट्रोल किए हैं. I remove height fit from here, even width fit be from here. That is wrong, na? If I have a grid, actually grid is not working as it's supposed to. I don't know, man. Let me do a thing. Let me quickly wrap this up. Right, I already have account. And no, it's not text semibold, it's font. Text white. Ah, black is it. Default is it. Cool. Already have an account. Login. And it'll be chosen to the login page. Think this is working good. Sign up. All right. So I think दोस्तों हमारा sign up page is, I mean UI wise it's 90% complete. Only the avatar thing needs to be done. यहाँ पे, and of course the responsiveness need to check on it. Why is it not? I need to check that. कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई. ठीक है, need to check that. I'll check it. Let you know what is the issue.
बाकी 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 यप, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद टुमारो विल स्टार्ट वर्किंग विद रिएक्ट हुक फॉर्म, और हम यहाँ पे जो ये फॉर्म बनाएंगे बना हुआ है उसके साथ विल प्ले अराउंड। बाकी ग्रेट ग्रेट जॉब, टुडे वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट प्रोग्रेस इज मेड, and very soon we'll be completing with this project, है ना दोस्तों? तो it was really really good, right? Good job, great job। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगली स्ट्रीम में, ठीक है दोस्तों? चलो राधे राधे।